Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, I hope you will be fine. Today I am here with another lecture of the course Signal and System. In few previous lectures we have talked about various properties of signals. We have discussed continuous time signals, discrete time signals, periodic and aperiodic signals, even and odd signals, energy and power signals, and similarly we have discussed sinusoidal and exponential signals. So today we are going to discuss a little bit about systems, because this course is about signals and systems. So we have discussed a few things about signals, and today we are going to discuss a few little concepts about systems. In the following lectures we will talk more about systems and their properties, but in this short lecture we will only talk about the definition of a system and the difference between a continuous time system and a discrete time system, and we will also talk about a little bit about the interconnection in which these systems can be connected. So let's start our today's lecture. So this is the outline of what we will be discussing in today's lecture. We will talk about the definition of a system. So what is a system? We will define the system. Then we will also talk about a single input single output system and multiple input multiple output system. So we basically have two different kinds of systems. One is called single input single output, and other is called multiple input multiple output system. We will also talk about some block diagram symbols which we will later use in this study of system, and we would take an example of an electric circuit which we will model as a system, and we will talk about its input output relationship. Since we have also discussed this with respect to signals, that we have continuous time signals and similarly discrete time signals. So same is the case with systems. So we will also talk about continuous time and discrete time systems, and then finally we will talk about the interconnection between these various systems. So systems can be interconnected in a lot of different ways. One such connection is called series interconnection of system. Similarly we have a parallel interconnection of system, then as an interconnection which is called series parallel, and finally feedback interconnection of system. So this is just a short outline of the topics which we will be discussing in this lecture. Okay, so let's define what is a system. So a system may be viewed as an interconnection of operations that transform an input signal into an output signal. So at the input of our system we will give a signal which could be a continuous time signal, or it could be a discrete time signal, depending upon the system कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है. सो नॉर्मली कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स को जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं वो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देते हैं, और it produces a continuous time signal at the output generally, but this is not always true. लेकिन generally ये है कि हम continuous time systems को एक continuous time signal input पे देते हैं और वो एक continuous time output signal produce करता है. इसी तरह से discrete time signal को हम discrete time system को हम input पे एक discrete signal देते हैं, and it generally produces a discrete signal at the output generally.
but in some cases this could also happen कि हम एक system को continuous time signal input पे दें and it may produce a signal which is a discrete time signal. An example of such a system is called an analog to digital converter, जिसमें इनपुट सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है बट द आउटपुट इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म. सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आप सिस्टम की इनपुट पे डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो इनपुट पे दें और द सिस्टम में प्रोड्यूस एंड अ कंटिन्यूस सिग्नल एट द आउटपुट. सो वन सच सिस्टम that is the opposite of analog to digital converter, that is called digital to analog converter. So digital to analog converter में आप एक digital signal जो है वो input पे देते हैं और output पे आपको एक continuous time signal या analog signal मिलता है. So generally the properties of output signal are different from input signal. तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन आपका सिस्टम उस इनपुट सिग्नल पे परफॉर्म करता है. वो ऑपरेशन डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके पास कोई भी जो सिग्नल है उसके जो 3 पैरामीटर्स हैं वो उस 3 पैरामीटर्स जो हैं वो सिस्टम चेंज कर सकता है या चेंज करता है. वन सच पैरामीटर इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल. सो ये पॉसिबल है कि आपका कोई सिस्टम जो है वो इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इन्हांस कर दे, एम्पलीफाई कर दे या उसको जो है वो कम कर दे. इसी तरह से एक और पैरामीटर जो सिग्नल का होता है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. सो ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे या उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज को रिमूव कर दे. एंड सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ फिल्टर, जो कि आपके कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को आपके इनपुट सिग्नल में से रिमूव कर देता है. इसी तरह से तीसरा पैरामीटर जो है वो फेज होता है सिग्नल का. सो फेज के अंदर भी आपका सिस्टम कोई ना कोई चेंज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो जनरली जो आउटपुट सिग्नल होगा दैट वुड बी डिफरेंट than the input signal. However, one particular system which is called a unity system, उसकी जो इनपुट सिग्नल आप उसको देंगे वही सिग्नल जो है वो आपके पास आउटपुट पे भी आएगा. सो it doesn't change that signal अगर वो आपका सिस्टम जो है वो यूनिटी सिस्टम है. and that unity system has also a number of applications in different scenarios. Later in the course we will discuss about those applications जहाँ पे हम unity system को use करते हैं. But generally speaking जो आपके पास output signal होगा that would be different than the input signal which you are applying at the input of your system. So your system which we are going to discuss in this course that may be made up of physical components, like for example it could have electrical components like resistor, capacitor, inductor, or it could have some mechanical components. Your system may have some mechanical components. So if your system is made up of certain physical components, then that is known as the physical realization of your system. Or your system may only be an algorithm जो कि आपकी इनपुट के सिग्नल को चेंज कर रहा है. सो ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो जस्ट एक एल्गोरिदम हो और वो एल्गोरिदम आपके इनपुट सिग्नल के अंदर कोई ना कोई चेंज ला रहा हो. सो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो then that is called the software realization of your system. और अगर आपका सिस्टम एक्टिव फिजिकल कंपोनेंट से, एक्टिव या पैसिव फिजिकल कंपोनेंट से मिलके बना है तो then such a system is a physical realization. और अगर वो एक प्रोग्राम है या एक एल्गोरिदम है जो आपके इनपुट सिग्नल को चेंज कर रहा है then that is a software realization. Okay, so now let's define let's formally define what is a system. So system is something which has some inputs. It could also be one input and it could also be one output. In that case it is called single input single output system.
और ये भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में मल्टीपल इनपुट्स हों, मोर देन वन, और मल्टीपल उसकी आउटपुट्स हों। सो इफ़ दैट इज़ द केस, अगर आपके सिस्टम में जो है वो इनपुट्स जो हैं एक से ज़्यादा हैं, मल्टीपल हैं, और आउटपुट्स भी एक से ज़्यादा हैं, तो देन सच अ सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इन शॉर्ट वी कॉल सच सिस्टम एज माइमो। और सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है तो that is called SISO. So systems normally accept input signals or excitations, and they produce some output signal which is also called the response of that system. So input signal is also called an excitation. So you excite your system with the help of that input, and the output of the system which it produces is also called the response of that system. So response या output इन दोनों का मतलब एक ही है, और excitation या input जो है वो उसका मतलब भी एक ही है. So systems are normally represented with the help of block diagrams. So for example, one block diagram of a system is this. This is a system. We are giving it an input signal, continuous time input signal xt at its input, and this system is producing a continuous time output y of t as its response. So this is something which we call the system. This H, capital H, you can assume that this is some algorithm, some function, or some physical realization of your system. So systems normally, which we will discuss in this course, have a response which is called impulse response of that system. And impulse response is formally defined as, we will also define that impulse response in some lecture, but today we are just going to discuss if this system has an input xt, जो इसकी input है, अगर ये आपके पास इम्पल्स फंक्शन हो जाए. इम्पल्स फंक्शन ये हमने लास्ट टाइम सिग्नल्स की उसमें क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था. इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अगर डिस्क्रीट की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट पे वो 1 होता है, n इज इक्वल टू 0 पे, और बाकी हर जगह पे 0 होता है. और कंटिन्यूअस इम्पल्स भी इसी तरह से हमने डिफाइन किया था. सो अगर आप इस सिस्टम की इनपुट पे इम्पल्स फंक्शन इसको इनपुट पे दें तो इस सिस्टम का जो भी आउटपुट इस केस में प्रोड्यूस होती है वो इसका इम्पल्स रिस्पांस कहलाता है. और इम्पल्स रिस्पांस को हम h ऑफ t से, स्मॉल h ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इम्पल्स रिस्पांस बेसिकली एक ऐसी सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो कि हमें उस सिस्टम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो हाउ कैन वी गेट द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम? इट्स वेरी सिंपल कि आप उस सिस्टम की इनपुट पे इम्पल्स फंक्शन उसको इनपुट के तौर पे दें, तो उस इम्पल्स फंक्शन के लिए वो सिस्टम जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा that is called the impulse response of that system. So impulse response की टर्म में हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, और इसी इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ t जो टाइम डोमेन इम्पल्स रिस्पांस कहलाता है, इसको हम जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे तो इसी चीज़ को हम वहाँ पे एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे. बट इन शॉर्ट इस लेक्चर के लिए या अभी जो हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं, फ़िलहाल आपको सिर्फ ये बताना था कि इम्पल्स रिस्पांस जो है वो हर सिस्टम की एक ख़ास प्रॉपर्टी है, और कोई भी दो ऐसे सिस्टम जो एक दूसरे से डिफरेंट हों उनका इम्पल्स रिस्पांस सेम नहीं हो सकता. अगर दो सिस्टम्स का इम्पल्स रिस्पांस सेम है तो इसका मतलब है दे आर एग्जैक्टली सेम सिस्टम. सो इम्पल्स रिस्पांस जो है वो सिस्टम के एक अपना यू कैन से इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ उस सूरत में किसी और सिस्टम जैसा ही होगा जब वो दोनों सिस्टम एग्जैक्टली एक जैसे होंगे. सो सिस्टम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो आज के लेक्चर में तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करें या उससे नेक्स्ट लेक्चर में. सो सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पांस हम
जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस ही वो चीज़ है जो सिस्टम को डिफाइन करती है, जो सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस इम्पल्स रिस्पांस की टर्म में हम बता सकते हैं. Okay, so this is in the previous slide we have seen an example of a single input single output system. Now this is an example of a multiple input multiple output system. So here we have three different system, in fact four, H1, H2, H3 and H4. So this system H1, this is receiving an input X1 of t, and these two systems H2 and H3, both of them are receiving an input which is X2t. So we have two inputs, so that falls in the category of multiple inputs because they are more than one. So this X1t passes through this system, and similarly X2t goes through these two systems H2 and H3, and finally whatever is the output of system 1 or system 2 or system 3, that is fed as an input to this system which is H4, and it produces this output Y2t, और यहाँ से जो आपको system 1 से output मिल रही थी that is Y1t. So we have two inputs X1t and X2t, and we have two outputs Y1t and Y2t. So that's why it is a MIMO system, multiple input multiple output system. Okay, so now let's talk about some block diagram symbols which we used for different kind of systems. So ये कुछ terminology है जिससे हम अपने आप को familiar कर रहे हैं, क्योंकि ये हम again and again अपने इस course में use करेंगे for different kind of systems. So one such system which we normally encounter frequently and which we will use again and again in our course is a system which is called an amplifier. So an amplifier is a system जो normally जिसका function ये होता है कि वो आपके signal का जो magnitude है उसको amplify करता है, उसको enhance कर देता है. So इस amplifier को represent करने के लिए block diagram में different kind of symbols जो हैं वो use होते हैं, use हो सकते हैं, different books में वो different होते हैं. So एक फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि ये वाला जो है आपके पास कि हम इस एम्पलीफायर को इस तरह के सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी दिस इज जस्ट अ सिस्टम जिसकी गेन जो है वो k है. सो अगर आप इसको x इनपुट पे देंगे तो इट वुड प्रोड्यूस kx एट द आउटपुट. सो नॉर्मली दिस k इज ग्रेटर देन 1. सो जो भी आपका इनपुट सिग्नल है दैट वुड बी एम्पलीफाइड. इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक और ग्राफिकल मेथड ये वाला है कि ट्रायंगल की फॉर्म में जो है वो इस एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड अ थर्ड फॉर्म इज विच वी विल यूज इन दिस कोर्स, दैट इज़ वेरी सिंपल कि हम ये x जो है इनपुट है, kx जो है ये आउटपुट है. सो इनके दरमियान जस्ट वही ड्रा लाइन, और इस लाइन पे कहीं पे हम एरो बना देते हैं और इस एरो के ऊपर k लिख देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस ब्रांच की जो गेन है वो k है. सो एनी सिग्नल विच विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो उसकी जो गेन है इस ब्रांच में जब वो सिग्नल मूव करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कांस्टेंट k. सो वी विल यूज दिस सिंबल फॉर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. ऑल्दो ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, लेकिन हम इस कोर्स में एम्पलीफायर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. इसी तरह से एक और सिस्टम है जिसको समर कहा जाता है, SUMMER, या इसका और नाम उसका अकमुलेटर भी है. सो अकमुलेटर या समर का फंक्शन ये होता है कि इट हैज़ टू डिफरेंट इनपुट्स. ये इसकी इनपुट है x, ये इसकी दूसरी आउटपुट है इनपुट है y. सो इट हैज़ टू इनपुट्स x एंड y, एंड इट्स आउटपुट इज आइदर द सम ऑफ दीज टू इनपुट्स और द डिफरेंस ऑफ दीज टू इनपुट्स. अब जैसे यहाँ पे हम इसको x दे रहे हैं with a plus sign, we are applying this x with a plus sign, and we are applying this y with a minus sign. So its output would be x minus y. अगर यहाँ पे भी मैं प्लस लिख दूँ तो then its output would be x plus y.
सो एक समर के लिए या कम्युलेटर के लिए एक सिंबल जो है वो ये वाला यूज़ होता है। इसी तरह से एक और सिंबल जो यूज़ किया जाता है वो ये वाला होता है, जिसमें ये समेशन का साइन डाला जाता है। Function again is same, x is being applied with a positive sign, y is being applied with a negative sign, so output is x minus y. And finally एक और सिंबल ये है कि जस्ट यू ड्रा सर्कल, और यहाँ पे इस इनपुट के साथ आप मेंशन कर देते हैं कि ये प्लस साइन के साथ अप्लाई हो रही है, ये माइनस साइन के साथ अप्लाई हो रही है, सो आउटपुट इज x माइनस वाई। सो इन आवर कोर्स जहाँ पे भी हमें एकमुलेटर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा या समर यूज सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, वी विल यूज़ दिस सिंबल। Okay, then another system is called an integrator. So integrator जो है वो उसका फंक्शन ये, इंटीग्रेटर जो सिस्टम है उसका फंक्शन ये है कि जो भी आपकी इनपुट आप इस सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, ये उस इनपुट को इंटीग्रेट कर देता है। इफ़ यू आर अप्लाइंग इनपुट एट सम टाइम t, तो this system will generate a signal at the output which will be an integral from minus infinity up till this point t x tau d tau. So this is another example of a system which is normally used. Okay, so now let's talk about an example of a system. So system जैसा कि हम already discuss कर चुके हैं previous slides में कि systems जो हैं वो physical realizations भी हो सकती हैं जिसमें वो component से मिला के बनाए जाते हैं, और systems जो हैं वो algorithm की form में भी हो सकते हैं। कोई algorithm, कोई program जो आपके input signal को किसी तरह से change कर देता है, that is also called a system. So एक physical system की example देखते हैं हम। सो ये आपके पास एक RC लो पास फिल्टर है, एंड जिसमें आपके पास जो इनपुट वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज V in t, और ये आउटपुट वोल्टेज विच यू आर टेकिंग अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज V out t. So this simple RC low pass filter or simple RC circuit can be assumed as a system whose input is V in and whose output is V out. So V in is the input of this system, whatever is enclosed over here, this resistor and this capacitor. So ये resistor और capacitor आपके इस system का part है. So you are applying input voltage V in at the input of this system, ये जो RC system है, और ये जो output generate कर रहा है that is V out. So this is just a physical example of a simple RC low pass filter. This is single input single output. Obviously we have only one input over here and one output over here, so that's why it is called a single input single output. So systems normally have two kind of responses. One response is called zero state response. So let's talk a little bit about what is a zero state response, and then the second type is called zero input response, about which we will talk in the next slide. जीरो स्टेट रिस्पांस का मतलब ये है कि इनिशियली जो हमारे पास लेट्स सपोज जो कैपेसिटर था दैट इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर, सो स्टेट ऑफ दैट कैपेसिटर जो उस पे चार्ज था दैट इज जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो स्टेट रिस्पांस. सो स्टेट ऑफ दैट कैपेसिटर या चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर वाज इक्वल्स टू जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जीरो स्टेट रिस्पांस, यानी इनिशियली आपका जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we are giving it, we are exciting this system. Excitation of a system mean we are giving an input to a system V in, which is equals to this a u of t. U of t is unit step response. You remember unit step response जो है एक खास सिग्नल है हमारे पास, और यूनिट स्टेप जो है वो एक ऐसा सिग्नल है जो t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक उसकी वैल्यू 0 होती है. सो दैट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप. सो यूनिट स्टेप
को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो इनपुट है ये किस टाइम से लेके किस टाइम तक नॉन ज़ीरो होगी। सो चूँकि ये यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है ये इनपुट आपकी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक नॉन ज़ीरो होगी, और ज़ीरो से पहले ये ज़ीरो होगी क्योंकि यू ऑफ टी ज़ीरो से पहले आपके पास ज़ीरो होता है। चूँकि ये यू ऑफ टी, वैसे यू ऑफ टी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक 1 होता है, लेकिन चूँकि हम इसे ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ए होगा, क्योंकि यू ऑफ टी इज़ 1 तो ए सिर्फ रह जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो ज़ीरो होगा। तो ये हम अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। तो इस सिस्टम का जो हमारे पास रिस्पांस आएगा इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो ये आएगा वी आउट इज़ ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी into u of t. So this response is called zero state response because initially our capacitor was uncharged. So let's see कि final जो हमारे पास इस कैपेसिटर पे चार्ज है वो क्या होगा। सो ये जो आपके पास ये वी आउट की इक्वेशन ये इक्वेशन आपको बता रही है कि आपके पास जो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज है वो क्या होगा। सो लेट्स सपोज कि इसमें वी वांट टू सी कि आपके पास जो है वो ये t इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपके पास ये वी आउट टी क्या होगा। सो अगर मैं इस इक्वेशन में t को इन्फिनिटी पुट कर दूं, इस जगह पे t को इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो वी आउट विल बी इक्वल्स टू a u ऑफ t तो 1 होता है, सो वी आउट सिंपली विल बी इक्वल्स टू a। सो ये आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है ये वी आउट का ग्राफ है। सो जैसे जैसे टी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है ये एक कांस्टेंट वैल्यू ए को अप्रोच कर रहा है, एंड व्हेन टी बिकम्स इन्फिनिटी दिस वी आउट विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे देखना चाहते हैं कि t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इस वी आउट की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो ये वाला पॉइंट है। सो लेट्स सी अगर हम इसमें t को ज़ीरो पुट करें दिस विल बिकम e रेज टू पावर ज़ीरो, e रेज टू पावर ज़ीरो इज़ 1। सो ऑलरेडी एक प्लस 1 मौजूद है और ये एक माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। सो वी आउट एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो होगा, एंड एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इट विल बी इक्वल्स टू t। सो ज़ीरो से इट विल बी इक्वल्स टू a। सो ज़ीरो से लेके a तक ये इसकी ट्रांजिशन होगी। जैसे जैसे आप t को इंक्रीज करेंगे ये चार्ज जो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी दिस चार्ज विल बी इक्वल्स टू a। सो दिस इज कॉल्ड ज़ीरो स्टेट रिस्पांस। तो ये आपने याद रखना है। स्टेट, ज़ीरो स्टेट का मतलब ये है कि कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था या उसकी जो स्टेट है वो ज़ीरो थी। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि कैपेसिटर में ऑलरेडी चार्ज मौजूद है और हम इनपुट अगर अप्लाई नहीं कर रहे, ज़ीरो इनपुट का मतलब है कि वी आर नॉट अप्लाइंग द इनपुट, तो व्हाट हैपन्स टू दैट चार्ज जो कैपेसिटर के अक्रॉस मौजूद था। सो नाउ दिस इज़ द ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में ये बात की कि ज़ीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब ये है कि आप इनपुट को ज़ीरो कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग ऑन द इनपुट। वी इन जो है वो आपके पास ज़ीरो है। सो नाउ your V out is given by this expression. V out is some capital V naught e raised to power minus t over RC. So अब initially at t is equals to 0, अगर मैं t को 0 पुट करूँ तो this V out will be equals to V naught. So initially मेरे पास इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था that was equals to some कैपिटल V naught। अब जैसे जैसे टाइम
गुजरेगा, जैसे जैसे आपके पास t इंक्रीज करता जाएगा, चूंकि आप इनपुट पे कुछ नहीं दे रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं t को इन्फिनिटी पुट कर दूं तो दिस विल बिकम e raised to power minus infinity which is 0, so my v out will become equals to 0 at t is equals to infinity. So initial charge जो इस पे था at t is equals to 0 that was equals to v naught, और जैसे जैसे आप t को इंक्रीज करते जाएंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, एंड फाइनली at t is equals to infinity this will become equals to 0. So this is called the zero input response of this RC low pass filter. So we have two kind of responses, zero state and zero input. Okay, now let's talk about uh, two kinds of these systems. Signals की तरह, जिस तरह हमने signals के बारे में बात की थी, we have continuous time signals and we also have discrete time signals. So systems में भी ऐसा ही है, we have continuous time systems and discrete time systems. So continuous time system normally take a continuous time input signal and they produce a continuous time output signal. So for example, these are various input signals which are given to this continuous time system. This is a MIMO system, so it is taking a number of inputs x1 x2 up till xm, and it's producing a number of outputs y1 y2 up till yn. ठीक है, लेकिन जो सारे के सारे ये इनपुट सिग्नल हैं या सारे के सारे जो आउटपुट सिग्नल हैं, इस केस में ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं. सो दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम. सो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम normally takes a continuous signal as at its input and produce a continuous signal at its output. So this is an example of a MIMO. A similar example of a SISO system is this. It takes one input, continuous type input, this system takes, and it produces an output, continuous time output. So this is the example of a SISO system. So all physical systems like our circuit which we discussed in this lecture, that is a physical system. Similarly, any mechanical system which is physically realizable with the help of some mechanical components, so all such systems are continuous time systems. Now the discrete counterpart is called a discrete time system. So a discrete time system takes discrete inputs, it accepts discrete inputs and it produces discrete responses or discrete outputs. So x1k, x2k, xmk, all of them are discrete, and it is producing y1k, y2k,ynk, all of them are also discrete. So this is an example of a MIMO discrete time system. An example of a SISO discrete time system is this one. It is accepting a single input x of n and producing a single output y of n. All those systems which, फॉर एग्जाम्पल यू से सॉफ्टवेयर रियलाइजेशन, हमने दो किस्म की रियलाइजेशन की बात की थी, फिजिकल रियलाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर रियलाइजेशन. सो जितने भी ऐसे सिस्टम हैं जो सॉफ्टवेयर रियलाइजेशंस हैं, जो आपका कोई प्रोग्राम है, कोई कोड है, कोई एल्गोरिदम है जो आपके इनपुट सिग्नल को चेंज कर रहा है, सो ऑल सच सिस्टम आर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. Okay, so now finally let's talk about various interconnection of systems. Systems जो हैं वो एक से ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्ट भी किए जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ उनको कनेक्ट किया जा सकता है. सो कितने डिफरेंट टाइप के इंटरकनेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं. सो इसमें जो फर्स्ट इंटरकनेक्शन हमारे पास आता है, दैट इज़ called a series or a cascade interconnection. A series interconnection of systems is such that the output of one system, which is system 1 in this case, is connected to the input of the next system. So system 1 की जो output है वो system 2 की input है. So such an arrangement is called a series interconnection of system. An example of such a system is a radio receiver, और उसके बाद जो, and that is followed by an amplifier. So what is a radio receiver? Radio waves which we receive
from some distance location, that is a signal. So on our receiver side we have a system whose task is to receive the radio waves. So it receives those radio waves. For example, our system 1 is such system which is responsible for receiving those radio waves जो कि आपके पास किसी distant location से communicate हुई हैं और आपके पास किसी far end पे आप उनको receive कर रहे हैं. So normally such a signal which we receive at the receiver end, तो जब चूँकि ज़ाहिर है ये किसी चैनल से पास होके आता है, सो नॉर्मली इस जो दैट सिग्नल जो हम रिसीव करते हैं ऑफन इट इज़ नॉट वेरी पावरफुल. सो व्हाट वी डू कि हम इसके एम्पलीट्यूड को इसको एम्पलीफाई करते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को इन्हांस करते हैं, इसके लेवल्स को इन्हांस करते हैं. सो हम सिस्टम 2 यूज़ करेंगे एक एम्पलीफायर जो रिसीव्ड सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल विच इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम कि आपके पास व्हेन यू रिसीव सम सिग्नल तो उसको आप एम्पलीफाई करने के लिए एक सिस्टम यूज़ करते हैं. सो दीज टू सिस्टम्स, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 are connected in cascade, are connected in series. Another interconnection of system is called a parallel interconnection of system. So this is a parallel interconnection of system. So what is happening over here, same input is being given to both of these system. System 1 की input और system 2 की input same है, ठीक है. और जो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस आउटपुट को इस पॉइंट पे कंबाइन कर रहे हैं. सिस्टम 1 से जो कुछ आपके पास आ रहा है और सिस्टम 2 से जो कुछ आपके पास आउटपुट आ रहा है, हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग a combination as the output of this overall system. So इसकी एग्जांपल जो है is an audio system where we used several microphones और वो एक सिंगल एम्पलीफायर और स्पीकर सिस्टम को जो है वो सिग्नल फीड कर रहे होते हैं. सो हम फॉर एग्जांपल जब एक से ज़्यादा मल्टीपल माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, सो इट इज़ पॉसिबल कि एक सिस्टम जो है वो शायद हमारे उस सिग्नल को इतना एफिशिएंटली पिक ना कर रहा हो, कोई और उसको एफिशिएंटली पिक कर रहा हो, तो हम मल्टीपल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और फिर उनको उनकी जो सम है उनकी आउटपुट जो है उसका जो सम है वो आप किसी स्पीकर को या एम्पलीफायर अपने को दे सकते हैं ताकि वो आपकी जो वॉइस है जो मुख्तलिफ माइक्रोफोन्स एक आध पे अगर उसमें उसको सही तरह से नहीं भी पिक कर रहा था तो बाकी जो रिडंडेंट चूँकि आपने रिडंडेंसी जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, एक से ज़्यादा माइक्रोफोन चूज़ की हुई हैं, तो किसी एक ने भी अगर उसको सिग्नल को सही तरह से पिक कर लिया तो वो आपके पास ज़्यादा बेहतर आपके पास आउटपुट आएगी. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ parallel interconnection of system. Then the next interconnection is called series parallel. So here we can see that we are using 4 different systems: system 1, system 2, system 3 and system 4. These two systems, system 1 and system 2, they are in series with each other. क्योंकि इनमें वही डेफिनेशन जो हमने पहले सीरीज़ की डेफिनेशन की थी कि सिस्टम 1 की जो आउटपुट है दैट इज़ द इनपुट ऑफ सिस्टम 2. सो दिस इज़ अ सीरीज़ इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम. लेकिन अगर हम इसको इन दो सिस्टम्स को इस सिस्टम के साथ देखें, सिस्टम 3 के साथ, तो बोथ ऑफ दीज सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर इन पैरेलल विद दिस इंटरकनेक्शन विद दिस सिस्टम 3. क्योंकि अगर आप इधर से देखें तो इनपुट जो है वो सिस्टम 1 को भी हम यही वाली इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम 3 को भी हम यही वाली इनपुट दे रहे हैं. सो दिस सिस्टम 1 यू कैन से इज़ इन पैरेलल विद सिस्टम 3. और फिर यहाँ से जब आप ये एक ब्रांच आपकी यहाँ से आ रही है और एक आपके पास सिग्नल यहाँ से आ रहा है, सो फिर अगेन यू आर यूजिंग अनदर सिस्टम 4 और फिर इस सिस्टम 4 की जो आउटपुट है दैट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल दिस कम्बिनेशन. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इसको हम सिर्फ सीरीज़ इंटरकनेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम सीरीज़ में भी हैं. इसको हम सिर्फ पैरेलल इंटरकनेक्शन भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम पैरेलल में है, कुछ सीरीज़ में है. सो सच एन अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सीरीज़ पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम एंड दैट वी विल आल्सो encounter in our course. Various application of these systems we will later on discuss. Then another example is known as a feedback interconnection of system. So what happens in the feedback interconnection of system? ये आपके पास
दो सिस्टम है, ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। प्लीज़ रिमेंबर कि ये दोनों सिस्टम 1 और सिस्टम 2 पैरेलल नहीं है। पैरेलल ये उस वक्त होते जब इन दोनों को सेम इनपुट आप दे रहे होते तो फिर ये पैरेलल होते, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम 2 जो है ये सिस्टम 1 की आउटपुट है, ये सिस्टम 1 की जो आउटपुट है यू आर गिविंग दिस एज एन इनपुट टू सिस्टम 2, और फिर सिस्टम 2 की जो आउटपुट है वो आप इस इनपुट के साथ ऐड करके फिर सिस्टम 1 को इनपुट दे रहे हैं। सो दिस इज नोन एज अ फीडबैक इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम। एंड एग्जांपल, a practical example, real world example of this feedback interconnection of system is the cruise control system, which is used in your cars or in aeroplanes or in those applications. So what happens there, that for example if you are using this cruise control system for your car, तो उसमें होता ये है कि आप एक्सीलेटर जो है उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि आप एक स्पीड फिक्स कर देते हैं और आपकी कार जो है वो ऑटोमेटिकली उस स्पीड को मेंटेन रखती है। सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल, तो अगर आपकी स्लोप जो है वो ऐसी है तो ऑटोमेटिकली कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं। सो दिस सिस्टम, व्हाट दिस सिस्टम डज कि दिस सेंसेस द स्पीड ऑफ द कार। अगर कार की स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ये जो फ्यूल है उसकी, जो फ्यूल आप अपने इंजन को रन करने के लिए फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फ्यूल की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं। जब फ्यूल की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ओवरऑल आपकी कार की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली एज अपोज टू दिस, इफ यू आर गोइंग अप हिल, अगर आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है, तो अब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो ज़्यादा एनर्जी कैसे मिल सकती है कि आपके इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो उसके लिए उसके फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो ये एक सेंसिंग सिस्टम है जो ये सेंस करता है कि आपको जो है वो फ्यूल की क्वांटिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड फॉर योर कार। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ फीडबैक सिस्टम, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, बट फीडबैक इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम इज एन अदर वे टू इंटरकनेक्ट different kind of systems. So that was today's lecture, very brief. In the next lecture we will talk about, inshallah, we will talk about the properties of systems. Systems have a number of different properties, which is called, for example, invertibility, causality, stability, memoryless, linearity, time invariance. So we will talk about all of them, but that was for today, in which we discussed some basic systems. What is a system, in how many different ways they can be interconnected, and what are the different types: continuous time system, discrete time system. So till next time, thank you very much, and I hope you will you are observing all the precautions related to COVID-19. So in the next lecture, till next lecture, thank you very much, and Allah Hafiz.